lanes, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day. Hey everyone, welcome back to our channel Indian Couple in Europe. तो लास्ट एपिसोड में हमने आपको वेंगन की जर्नी दिखाई थी और आज के एपिसोड में हम आपको लेके जा रहे हैं टॉप ऑफ यूरोप में एंड विल शो यू द मैजेस्टिक जंगफ्रू रीजन. सो टॉप ऑफ यूरोप ऑलमोस्ट 11,362 फीट हाइट पे है फ्रॉम द सी लेवल. तो इतनी हाइट पे जाने के लिए स्पेशल माउंटेन ट्रेन में जाना पड़ता है. तो मैं आपको बता दूं, जाने के लिए आपको ऑफकोर्स वेंगन से ही जाना है. तो वेंगन तक की जर्नी जो है वो स्विस ट्रैवल पास के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट है. बट जब आपको वेंगन से जंगफ्रू के लिए ट्रैवल करना है उस टाइम पे आपको टिकट लेनी पड़ेगी और उस टाइम पे आपको स्विस ट्रैवल पास से 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा. तो गाइस हमने वेंगन के बाद फर्स्ट स्टॉप में ही स्टॉप ओवर ले लिया है बिकॉज अनायरा थोड़ी अनईजी सी हो रही थी ट्रेन में एंड बाहर के व्यूज़ भी काफ़ी अच्छे थे. तो वी डिसाइडेड कि थोड़ी देर यहीं पे अनायरा के साथ थोड़ा उसको कंफर्टेबल करते हैं, इन व्यूज़ को एंजॉय करते हैं और फिर सेकेंड ट्रेन में अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, and I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM. सो राइट नाउ वी आर इन क्लीन शेडेग. मैं आपको बता दूं यहाँ से आप चेंज करते हो अपनी ट्रेन जंगफ्रू के लिए. बट ये प्लेस इतना ब्यूटीफुल है सो वी डेफिनेटली डिसाइडेड टू स्टॉप हेयर फॉर सम टाइम सो दैट वी कैन एंजॉय दीज ब्यूटीफुल व्यूज़. और मैं एक और चीज़ बता दूं, विंटर में ये जो रीजन है ये वैसे भी बहुत ज़्यादा फेमस है स्की के लिए अराउंड ग्रिंडेलवाल्ड एंड वेगन. सो अगर आप विंटर लवर हैं और विंटर स्पोर्ट्स लवर हैं देन दिस इज़ द प्लेस फॉर यू. And I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb a new class divine. Yeah, true passion shines and I'm through passing time. I choose stacking dimes, you snooze half the time while I move passing by. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. So some snack time for Anira. And this is the Swiss beauty. सुबह सुबह this is a special mountain train जिसमें अभी कोई भी नहीं है. And see this Annie. Are you having fun?
TF10 स्नो गन जो एक्चुअली यूज़ होती है रेलवे ट्रैक को क्लीन करने के लिए, एंड ये आप पूरी जर्नी में काफ़ी बार नोटिस करोगे। सो क्लीन शेडेग से ऑलमोस्ट 45 मिनट्स की जर्नी खत्म करके हम पहुंच चुके हैं जंगफ्रू, द टॉप ऑफ यूरोप। पर मैं आपको बता दूं, जैसे ही हम पहुंचे वी आर हिट बाय द स्नो स्टॉर्म। यहाँ पे खड़ा होना भी बहुत मुश्किल है, तो इट इज़ क्वाइट अनफॉर्चुनेट क्योंकि यहाँ से बहुत ही मेजेस्टिक व्यूज़ है एंड इसीलिए ये टॉप ऑफ यूरोप फेमस है। तो आज हम तो वो मिस करने वाले हैं बिकॉज ऑफ द स्टॉर्म, बट जितना हो सके हम उतना फिर भी जाएंगे और कैप्चर भी करेंगे। सो ड्यू टू स्नो स्टॉर्म हम तो टॉप ऑफ यूरोप में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर पाए और हमने डिसाइड किया कि हम हेड बैक करेंगे वापस। तो आपको एक टिप दे देते हैं कि कभी आप प्लान करते हैं टॉप ऑफ यूरोप विजिट करने का स्विट्ज़रलैंड में, तो इंश्योर करना कि आप वेदर फोरकास्ट को चेक करें एंड उसके अकॉर्डिंगली अपना प्लान बनाएं एंड फ्लेक्सिबल रहें, ताकि जब आप वहाँ विजिट करें तो जो मेजेस्टिक व्यूज़ के लिए वो फेमस है उनको आप इंजॉय कर सकें। सो व्हाइल कमिंग बैक हमने नोटिस किया जो स्नो स्टॉर्म था वो एक्चुअली टॉप ऑफ यूरोप तक ही लिमिटेड था। जब हम नीचे आए तो वेदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया और उसकी वजह से जो माउंटेन का व्यू है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। तो बस जर्नी कंटिन्यू करते हैं और हेड बैक करते हैं लॉटनबर्नन की तरफ।